Hello students, this is a topic 17 and this contains application of product of vectors. Application of product of vectors. This is application of product of vectors, topic 17. बैक जो इससे जस्ट पहले 16th टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग क्लैरिफाई किए थे कि कैसे हम डॉट और क्रॉस करते हैं और व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस एंड व्हाई वी मेक दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस टॉपिक. एंड दिस टॉपिक आवर मोटो इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट्स. इट मींस डॉट और क्रॉस को यूज करके हम कैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इनके फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन अंडरस्टैंड कीजिए. फर्स्ट केस इज स्केलर. इट मींस डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट. लेट टू वेक्टर्स a and b are I minus 2j plus k and 4I plus 5j minus 3k. पहले हम ये समझेंगे कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, हाउ वी कैन मेक अ स्केलर प्रोडक्ट. तो जैसे हमने पिछली बार डॉट और क्रॉस के रूल डिस्कस किए हैं, इफ वी मेक अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए डॉट बी देन आंसर विल बी I minus 2j plus k dot 4I plus 5j minus 3k. This is a dot b. It is I minus 2j plus k dot 4I plus 5j minus 3k. First we have to make a dot product between two vectors and how we can do this डिस्कस कर रहे हैं. जैसे हमने डिस्कस किया है I dot I हमारे प्रीवियस टॉपिक में I dot I is 1, I dot j is 0. सिमिलर टू वेक्टर्स का डॉट 1 होता है, डिसिमिलर का 0. Then here I and this is 1 4 ja 4 and it is not compulsory to make a product between I and j because we know it is 0. ij is 0, ik is 0. So use only I with I, j with j and k with k. It is 1 4 ja 4 minus 2 5 ja minus 10 and 1 3 ja minus 3. 3 minus 1 ja minus 3. It is minus 9. So a dot b in this problem will be minus 9. I minus 2j plus k is first vector. 4I plus 5j minus 3k is second vector. It is 4 minus 10 minus 3. It is minus 9. A dot b is minus 9. So dot of two vectors is a scalar number. This is the method to make dot product between two vectors. Now applications. मैंने आपको बताया था कि वर्क जैसे केसेस में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है. Then here we will consider a case example 2 that a force of 6I plus j minus 3k Newton is acting on a body, and due to application of this force, let a particle moves from the point A to the point B, which is 4I plus j plus 3. This is the force, and due to application of this force, a particle starts from this point and ends up to this point. Then dot product के application से work कैसे calculate होगा देखें. So when the displacement AB, we can obtain the displacement AB by subtracting A vector by B vector. We know it very well in our vector theory discussion starting. We have discussed this. AB vector निकालने के लिए A से B तक vector बनाने के लिए आपको B position से A position minus करनी होगी. So AB vector is B vector minus A vector. It is 4I plus J plus 3K minus I plus j plus 2k. So the difference is 4I minus I is 3I. J and j are cancelled here. 3k minus 2k is k. It is 4I minus I is 3I. J and j are cancelled. 3k minus 2k is k. So it is 3I plus k. AB vector is 3I plus k and force vector is this. So work in this process will be F dot displacement. F dot displacement, F is 6I plus j minus 3k dot displacement is 3I plus k. And answer is 6 3 is 18 I to I. J is not present in displacement term, so you can leave it. Minus 3 will be minus 3. Answer is 15 joule. So if this much force is working on a particle and moves, if the force moves the particle from position A to B, then displacement AB will be 3I plus K and work is F dot D. It is
15 joule. So 15 joule work will be done in the process. So first, what is a scalar product and how we have to do this? Second, use of scalar product to calculate the value of work done in the process. तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल कि हम वर्क जैसे केसेस में जहाँ दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते वक्त एक दूसरे की डायरेक्शन में घूमना चाहते हैं, हमें अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, then scalar product is beneficial for us. This is 15 joule. Then this is the application of scalar product, and other application is to find the projection of a vector along b vector. Projection of a vector along b vector. Suppose we have to find the projection of a vector along b vector, and let a and b are same as in the previous problem. It is I plus j plus 2k, and b vector is 4i plus j plus 3k. That these are two vectors, and we have to find projection of vector a along b vector. Let a is I plus j plus 2k and b is 4i plus j plus 3k, and ask motor is to find the projection of a along b. And in geometry it is like that. It is, let this be b vector. Suppose b vector is not along x-axis, it is 4i plus j plus 3k, but for our discussion we are doing this. So b vector is, let this is b vector and a vector is this side. Then projection of a along b, projection of a along b means this much length of this way. This is called projection of a along b. According to diagram, this vector is a vector and this is b vector. It terminates at this position, then this part which is arrowed here, this part is known as projection of a along b. And if we use a scalar product, then how we can calculate this? This can be calculated by using the formula a dot b. We know that in trigonometry this angle is theta, and this vector is a and its magnitude is a mod, then definitely this base will be a mod cos theta. It means जब हम a vector का b के along projection निकाल रहे हैं, तो हम really a cos theta calculate कर रहे हैं. Our motive is to find a mod cos theta, and we know that a dot b is defined as a mod b mod cos theta. This is the definition of it. So take b mod in denominator, you will get a dot b over b mod is a mod cos theta. So this a mod cos theta is projection of any vector a along b, and this is the way to find it. यानी अगर आपको इस वेक्टर का इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है तो वैल्यू होगी a dot b, dot of these two, a dot b. What is a dot b here? A is I plus j plus 2k and b is 4i plus j plus 3k. So a dot b is equal to I plus j plus 2k dot 4i plus j plus 3k divided by mod of b. And we know that how to calculate mod. Mod means under root of 4 square plus 1 square plus 3 square. This is mod of b. यानी डिनोमिनेटर में उस वेक्टर का मॉड लेना है जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है. हम a का प्रोजेक्शन b के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मॉड में b का मॉड ले रहे हैं. अगर हम b का प्रोजेक्शन a के अलोंग कैलकुलेट करते तो हम डिनोमिनेटर में a का मॉड लेते हैं. Whose direction is preferred? That mod is here in the denominator. Denominator contains the mod of the direction, not of the vector. A is the vector here and b provides its direction. So mod will be associated to b. And now dot is 4 1 ja 4, 1 1 ja 1, 2 3 ja 6 divided by root of 26. It is 11 by root 26. This is the projection of a vector along b vector. So a का b के along projection 11 by root 26 होगा. This part is 11 by root 26. तो किसी वेक्टर a का किसी वेक्टर b के along projection आंसर होगा 11 by root 26. This is the projection part of a vector along b vector. आप इस डायग्राम को और इस आंसर को समझें. एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, और कभी कभी प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में बताना होता है जबकि हमारा आंसर स्केलर में है, क्योंकि हम अपने आंसर में इस वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं. अगर आपको अपना आंसर वेक्टर फॉर्म में देना है, कई बार एग्जाम के ऑप्शंस वेक्टर में होते हैं, देन आपको कुछ नहीं करना है. आपने जो प्रोजेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया 11 by root 26, इसे b वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में आपका आंसर है उसका यूनिट वेक्टर प्रोवाइड कर दें. b is 4i
plus j plus 3k and divided by mod of b, it is root 26. तो अगर आप b के यूनिट वेक्टर को इस न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में एफिलेट कर देंगे तो अब जो आपका ये आंसर है ये प्रोजेक्शन ऑफ a अराउंड b इन वेक्टर फॉर्म है। एक बार फिर समझें कि a का प्रोजेक्शन b के अराउंड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है a डॉट b डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज associated with the problem. B provides direction in this problem, so mode denominator contains the mod of B. So A dot B by B mod. It is 11 by root 26, and for finding the vector form of answer, take direction of B in it. The final answer will be, final answer will be 11 by 26. 11 upon 26. It is 11 by 26, and 4i plus j plus 3. So for finding the projection of any vector along any other vector, for work in calculation and how to make a scalar product between two vectors. Now make a discussion about cross product, how to make cross product between two vectors. First, we define here that how we have to make cross, then its applications. First, what is cross product? Let two vectors A and B are. A is I plus j plus 3k and let B vector is 6i minus plus j plus 3k. Suppose these are two vectors. These are two vectors. A vector is I plus j plus 3k and B vector is 6i plus j plus 3k. Then how we have to make the cross between these two vectors? The method to make a cross product between vectors. पहले आप इसे समझें कि कैसे हम क्रॉस करें. Then A cross B can be obtained by using a determinant between these two vectors. Then what is determinant? ये बात आप मैथ्स में भी बहुत डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी फिजिक्स में एक रफ समरी देते हैं. I, J K put the unit vectors in first row. Then coefficient of A in the first column, first and second row, 1, 1, 3, and coefficient of B in the third row, it is 6, 1, 3. So A vector is I plus J plus 3k, B vector is 6i plus J plus 3k. So A cross B will be I j k in the first row, 1 1 and 3 in the second row, and 6 1 3 in the third row. This is called determinant, which contains unit vectors I j k in the first row, coefficient of A in the second row, and coefficient of B in the third row. यहाँ ध्यान रहे कि अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहले A के कोफिशिएंट यूज होने चाहिए, फिर B के. अगर आप ये कोफिशिएंट रिवर्स करते हैं तो आपके आंसर में नेगेटिव का फॉल्ट आ जाएगा. सो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. अंडरस्टैंड इट. पिछले टॉपिक में हमने बात करी की थी क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. सो ए क्रॉस बी इज आई जे के 1 1 3 एंड 6 1 3. नाउ हाउ टू मेक दिस, हाउ टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. नाउ इज इक्वल टू आई, दिस इज आई कैप. डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आई कैप के साथ आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे. So I, and inside it the number will be 1 3 ja 3 minus 3 1 ja 3. First this diagonal, then this. It is I 3 cross 3. This first and then this. This is the way to make cross product. I is 3 minus 3. Plus minus, sorry, and then a minus sign is here. It is in the formula directly. ये minus sign केवल reversal के लिए है, क्योंकि हम I के समय ये डायगोनल फिर ये डायगोनल यूज करते हैं. तो J के जब हम J के कोफिशिएंट लेंगे तो हमें 3 6 1 3 ऑर्डर लेना चाहिए, लेकिन हम अपनी सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए सीधा ऑर्डर लेते हैं. तो हर एक अल्टरनेट के बाद साइन एक्सचेंज होता रहेगा. इट इज I 3 minus 3, I 3 minus 3 minus J, and with J the number will be direct between this and that. This इट मीन्स जब आप माइनस जे लेंगे तो आपका नंबर होगा 1 3 जा 3 माइनस 6 3 जा 18. सो यहाँ पर ऑर्डर, क्योंकि जब आई लिया था तो जे के होना चाहिए था, वही है, लेकिन जे के वक्त के आई होना चाहिए था, और हमने अपना ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ये डायगोनल पहले लिया और बाद में ये डायगोनल लिया, तो इसके लिए माइनस फॉर्मूले में पहले से इंक्लूड कर दिया. सो आई 3 minus 3 minus j 1 3 ja 3 minus 3 6 ja 18 plus k now, and final k
and with k we have to take this cross multiplication. With k it will be 1 1 ja 1 and 6 1 ja 6 minus. So final answer will be 0i. There is no term of I. It is 15j minus 15 minus plus 15 minus 5k. So cross product of a and b is 15j minus 5k. Then this is the way to make cross product between two vectors. आप क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1i को 6i से क्रॉस करें, ये 0 होगा. फिर आप 1i को j से क्रॉस करें, i और j का क्रॉस k बन जाएगा. फिर आप i को k से करेंगे, माइनस j बन जाएगा. बट वो प्रोसेस कमरसम है, उसमें आपको 3 3 9 टोटल 9 टर्म्स का एक एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा. बेसिक प्रैक्टिस में हमें हमारे मॉड्यूल में या हमारा मटेरियल ये अलाउ करता है कि हम बच्चों को डिटर्मिनेंट बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में आसानी होगी. ये इजी मेथड है. सो वी यूज़ हियर ओनली द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट. आपको नॉर्मल मेथड पे इसीलिए नहीं दे गया क्योंकि वो मेथड लंबी है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है. लेकिन अगर आप कभी करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप आई जे के आई के जे एंड के दिस ऑर्डर. देयर आर 9 टर्म्स. तो आप इन 9 टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो आपको ये आंसर बिल्कुल मिलेगा. लेकिन वहाँ ध्यान रखिए कि जब आई के आई से करेंगे तो 0 आई क्रॉस जे को के लेंगे और आई क्रॉस के को माइनस जे लेंगे. और अगर आप प्रॉपरली परफेक्ट मैनर में इसको करते हैं तो इस मेथड से भी आपका आंसर आना चाहिए. सो ए क्रॉस बी इज 15j minus 5k. बट डिटर्मिनेंट को और समझें, जब आप आई लिख रहे हैं तो आई के साथ आपके कोफिशिएंट हैं जे और के कोफिशिएंट का क्रॉस प्रोडक्ट. जे के एक्सप्लेनेशन में आपने आई और के यूज किए हैं कोफिशिएंट. के एक्सप्लेनेशन में के वैल्यू में आपने आई और जे के कोफिशिएंट यूज किए हैं. सो फाइनल आंसर इज 15j minus 5k. दिस इज ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. नाउ the theme applications, how we have to apply this cross product definition in questions. First I will give you an idea about if our question is to find a vector perpendicular to b vector which is I plus j plus 3k and c vector which is 6i plus j plus 3k. The two vectors are these two. B vector is I plus j plus 3k, same as this, and C vector is like 6i plus j plus 3k. मैं वही एग्जांपल बार-बार ले रहा हूँ ताकि मैं ये डेटा यूज कर सकूँ. Then a vector perpendicular to both these two. अगर हमको कल कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक ऐसा वेक्टर बनाइए जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके हम इसे आंसर निकाल सकते हैं. ये जो वेक्टर हमने ए और बी को क्रॉस करके निकाला है, ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ये बात आप याद रखें कि जब आप दो वेक्टर ए और बी को क्रॉस करके एक रिजल्ट निकालते हैं, देन रिजल्ट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस टू वेक्टर्स. ये बात आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपने आई और जे को क्रॉस किया तो राइट हैंड थंब रूल से जो रिजल्ट आया वो के था, एंड के इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जे. फिर भी एक इवैल्यूएशन चेकिंग कर लेते हैं. A or B, these are two vectors, and here these two are as B and C. By making a cross product between B and C, B cross C, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15j minus 5, you know it. क्योंकि ये वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर लिया है. A ये वेक्टर है, B ये है. अब मैंने इस बार इसे B और C लिया है. Then B cross C will be 15j minus 5k. Now make a dot between this result एंड बी. मतलब मेरे कहने का है कि जो हमारा एक बी और सी को क्रॉस करके रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को मैं इस वेक्टर से डॉट करूंगा. देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? फर्स्ट अंडरस्टैंड बी क्रॉस सी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, एंड मेक अ डॉट बिटवीन दिस एंड बी. इट विल बी 15j minus 5k dot I plus j plus 3k, and it is 15j I, and there is no term of I, so I is not used here. J with j is 15 and k with k is minus 15. It is 0. In the same manner, if you make a cross product between B cross C and C, it is C, then it will be like 15j minus 5k. This is B cross C dot C is 6i plus j plus 3k, and dot between these two is 0. 15 1 ja 15 minus
5 3 is 15. It is again it is 0 again. So यहाँ पर आप एक बात देखते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स का b और c का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसे में जो आपका रिजल्ट आता है b क्रॉस c, वो b क्रॉस c b से भी 0 डॉट प्रोवाइड कर रहा है और c के साथ भी 0 डॉट प्रोवाइड कर रहा है। और कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ 0 डॉट प्रोवाइड केवल दो कंडीशन में कर सकता है कि या तो उसका मैग्नीट्यूड 0 है या वो उसके परपेंडिकुलर है। और यहाँ हम देखते हैं कि B and C both are non-zero vectors. Neither B is 0, neither magnitude of B is 0, nor that of C is 0. But still, B and C are giving 0 as the dot between B cross C and B cross C and C. It means B and C both are perpendicular to B cross C. It means B cross C is a vector here which is perpendicular to B as well as perpendicular to C. यानी दो वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस कर दें तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों की परपेंडिकुलर। तो एक एप्लीकेशन की अगर क्रॉस, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दैट, देन द सिंपलेस्ट वे टू मेक अ क्रॉस बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, यू विल गेट an answer and that answer will be the associated answer. This is a vector which is perpendicular to both. अगर ऐसे में कहा जाता है कि हमें यूनिट वेक्टर का आंसर दीजिए, then divide this B cross C by its own mod. It is 15j minus 5k divided by root of 15 square plus 5 square. Now solve this and get the answer. अगर आपको वेक्टर निकालने को कहा है तो क्रॉस करके छोड़ दें, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्रॉस करने के बाद उसके मॉड से डिवाइड करके उसे यूनिट में बनाएं. This is the application of cross product for finding a vector perpendicular to two given vectors. And how to make cross product. ये दो बातें हमने इस टॉपिक में भी सीखी हैं. एक इस इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और में पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि टॉर्क जैसे केसेस में हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं. देन सपोज द क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 6i plus j plus 3k Newton is acting on a particle, acting on a body at a point P, and the position vector of P is 2i plus 3j plus 5k. And calculate, we have to calculate the torque of this force about the point O. O is I plus j plus k. Suppose this is O vector here. O is the position about which we have to calculate the torque of force F, and P is the point at which F is working. So you know that torque is force into perpendicular distance from the pivotal point. So first calculate the vector OP. First calculate vector OP. OP vector will be, as in the previous discussion of work, OP is P minus O. So it is 2i plus 3j plus 5k minus i plus j plus k. It is I plus 2j plus 4k. This is OP vector. OP is P minus O. P is 2i plus 3j plus 5k. This is the point where force is working. O is the point about which we have to calculate the torque. So OP vector is P minus O vector. 2i plus 3j plus 5k minus i plus j plus k. 2i minus i is I. 3 minus j is 2j. 5k minus k is 4k. This is OP vector, and force vector is that. So as a definition, torque is defined as OP vector cross F. यहाँ ध्यान रहे, displacement is taken in earlier vector always. You can't take F cross OP. It is always OP cross F. Commutative नहीं होता है, discuss हो चुका है. Tau is OP cross F. Now OP cross F can be obtained by determinant method. OP vector is this. So take ij in the first line, 1, 2 and 4. These are the coefficient of OP. F coefficients are 6, 1 and 3. And now solve this. And you know how to solve this. I 2 3 just 6, 4 1 just 4. 6 minus 4 2. 6 minus 4. ध्यान से समझें. 2 3 just 6, 4 1 just 4 minus j, और j के साथ 1 3 just 3, 4 6 just 24, and plus k, and the coefficient of k is 1 1 just 1, 6 2 just 12, 1 minus 12, and it is 2i plus 21j, 2i plus 21j minus 11k. This is the answer. Torque is 2i plus 21j minus 11k. The answer is there in vector form because torque is a vector quantity. Vector quantity है,
आपका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप अपने टॉर्क आंसर को न्यूमेरिकली बताना चाहते हैं तो आपने इसका मॉड करना होगा, एंड यू नो दैट हाउ टू मेक मॉड। इट इज रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 21 प्लस स्क्वायर ऑफ 11। तो आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, टॉर्क को विद डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और इसके लिए आप यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्रॉस एक ऐसा तरीका है जो वेक्टर को अपने आप टर्न करके परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर देगा। यही खास है क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के बाद केवल हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि वो टर्न कब होगा, कैसे होगा। क्रॉस प्रोडक्ट है, इट मीन्स वो टर्न हो जाएगा परपेंडिकुलर। दैट इज द वे ऑफ making the solution for torque acting on a particle about a particular point. Force is given. The point where force is applicable is also given. Point about which calculation has to be made is also given. First calculate OP vector, then F vector is given. So torque is 2i plus 21j minus 11k, and by taking mod you can obtain the numerical answer for torque. Its unit will be Newton meter. और ये सब हम आगे यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। So this is the application of cross product to find torque. Some other applications of cross products are discuss these applications. Very first application, if in a triangle from a point O, in a triangle OAB, if OA vector is given as I minus 2j plus 3k and OB vector is given as 2i plus 3j plus 6k. If OA vector is I plus minus 2j plus 3k and OB vector is this, and we have to calculate the area of this triangle by using these two vectors, then the formula of area will be, area is half of OA cross OB mod. और एरिया के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने की वजह आप जानते हैं, बिकॉज एरिया इज बेस into height into half. Since we have to take perpendicular component of this vector for this, area is base into perpendicular height, and perpendicular distance can be calculated by using cross without any problem. So cross, make a cross between O and OB. जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं कि एरिया तो ये इंटू ये होना चाहिए, हम क्रॉस प्रोडक्ट में इसको इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझें कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ टेक्निक जिसमें जब आप इस वेक्टर को इससे क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर अपने आप टर्न होके यहाँ को घूम जाएगा। वो कैसे होगा वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट बनाने वाले की मेथोडोलॉजी का प्रॉब्लम है। वो अपने आप टर्न होके यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ओ और ओ बी को क्रॉस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ओ बी को क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बेस को परपेंडिकुलर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्रॉस का तरीका है सॉल्व करने का। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑब्टेन दिस। इसे मैं यही छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपने इन दोनों को क्रॉस करना है डिटर्मिनेंट बना के, और लास्ट में जो आंसर आ जाए उसका मॉड ले लीजिए, क्योंकि एरिया न्यूमेरिकल आंसर आना चाहिए, कोई वेक्टर नहीं आना चाहिए। हालांकि फर्दर 12th में आप एक एरिया को एरियल वेक्टर के रूप में सीखेंगे कई चैप्टर्स में, बट अभी आप एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो मॉड लेना मत भूलिए। दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली इफ वी हैव a quadrilateral, a parallelogram, and we have to obtain the area of this by using vector OA and OB. Suppose OA and OB are given and area is to be calculated, then same process, calculate OA cross OB without taking half and outside, क्योंकि parallelogram का area base into height होता है तो half की requirement नहीं है। This is the formula for finding the area of this parallelogram. So this is area of parallelogram, this is area of triangle. सिमिलरली अगर किसी पैरेललोपाइड मीन्स कोई ऐसी डिवाइस जो पैरेललोग्राम जैसी ही है मगर 3D में, मतलब जिसकी हाइट भी है, और उस पैरेललोपाइड के एक कॉर्नर से 3 कंसेक्यूटिव साइड्स आपको दी हुई हैं OA, वी आर डिस्कसिंग फॉर पैरेललोपाइड। देन फॉर पैरेललोपाइड इफ OA वेक्टर इज लाइक I minus j plus k, OB वेक्टर इज 3i plus 2j minus 7k, and OC vector is 6i minus j plus 5k. Like these are 3 vectors at a particular point, OA, OB and OC. और अगर इन तीनों को यूज करके हम एक पैरेललोपाइड बना के उसका एरिया निकालना चाहते हैं
तो क्रॉस प्रोडक्ट इसमें भी हमारी हेल्प करता है। उसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होगी जिसकी फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट्स होंगे कोफिशिएंट्स ऑफ OA, दिस इज 1 minus 1 and 1, second line 3 2 and minus 7, and third it is 6 minus 1 and 5. These are the coefficient and by this we can obtain the volume of parallel. So वॉल्यूम निकालने का तरीका, अगर मैंने एरिया कहा तो आप उसे वॉल्यूम समझें, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए भी आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करके आप इसे इन दोनों का क्रॉस करने के बाद इसे डॉट करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, ना आप डॉट यूज करेंगे ना ही क्रॉस। अगर आपको OA OB OC तीन कंसेक्यूटिव साइड किसी पैरेललोग्राम की पता है वेक्टर फॉर्म में, तो आप तीनों साइड्स के कोफिशिएंट एक डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे। फर्स्ट रो कंटेन्स द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो कंटेन्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड थर्ड रो कंटेन्स कोफिशिएंट ऑफ थर्ड वेक्टर। एंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, you know how to solve it. It is 1 into 2 5 ja 10 minus 7 minus 1 ja plus 7 minus 1, पहले यहाँ I J K था, अब यहाँ 1 minus 1 1 है, वैसे ही लिखते जाइए। I की जगह 1, उसके साथ 2 5 ja 10 minus 7 minus 1. This minus is associated to formula and this is personal minus of 1 and coefficient is 3 5 ja 15 minus 7 minus 6 ja minus 42. Minus 42, this minus is for this and this is common minus, and finally plus 1, this one is last one, and 3 1 ja minus 3 and minus 12, minus 3 minus 12. So on solving it will be 3 plus 1 and it is 57 and 4 5 57 it is, and finally it is minus 50. So finally it is 60 minus 15, it is 45 is the value of volume of this paralleloid. तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने में, एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, और हाउ टू मेक क्रॉस प्रोडक्ट, दीज आर द टॉपिक्स एसोसिएटेड इन दिस लेक्चर। ये एक बेसिक थीम है, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर्स एक लेसन है, तो वहाँ पर आप इससे ज़्यादा एडवांस थ्योरी सीखेंगे और डिटेल्स में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप अपनी फिजिक्स को एक रन मूवमेंट देने के लिए ये सब स्टडी करें। तो यहाँ पर एक बेसिक डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने फिर आऊँगा और हमारा टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशंस की, क्या है यूनिट सिस्टम, क्या है डायमेंशंस, और उसका फुल एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में। थैंक यू।